Hello everyone, warm welcome to Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in a next and a very important session for your finance current affairs where we will be discussing 18th to 20th March news. All the finance current affairs will be covered. I hope you all know this very well that in this particular session हम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ सेबी एज वेल एज आईआरडीएआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज की न्यूज को भी कवर किया जाता है. वी कवर द सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, press release as well as the bulletins. So I hope you all are ready. I'm really very sorry for starting the session late. There was some technical issue because of which I was not able to go live, but I hope now everything is fine. We are good to go. So just let me know in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine. We are good to go so that we can start the discussion without any further delay. Give me a thumbs up so that we can begin the discussion. Okay, guys, if you want to download the PDF of this session, the PDF of this session is available on my Telegram channel. You can use this link in order to access my Telegram channel, and here you will find the PDF as well as all the updates related to my day-to-day classes. Chalo ji. So let's begin the discussion. I hope we are good to go. Okay, thank you so much for the reply. So let's get started, guys. Thank you so much for the reply. Let's get started. Here we go with the first news. But today I have changed the pattern of this session a bit, and I think you are going to like it. What I have done is, guys, firstly, we will be revising the questions based on the previous session, and then we will be discussing the current day's news. So today, first we'll start our discussion with the revision because last session was conducted on Thursday due to some medical issue to go live. So let's quickly revise the news or the questions based on the news which we have discussed on Saturday. Are you all ready, guys? Are you all ready? Are we good to go? Here we go with the first question from the previous session, and I'm pretty sure you will be able to answer it if you have gone through with the previous sessions thoroughly. The first question says, Reserve Bank of India issued the framework for self-regulatory organization for account aggregators. When did the Reserve Bank of India introduced account aggregator framework? So NBFC account aggregator framework was introduced in which year? What will be your answer? And what is account aggregator? Sir, account aggregator is basically a mediator which is capable to receive the information from the financial information provider, and once the information is received, the same information will be transferred to the financial information user only after the approval given from the customer. Only after the approval given from the customer. And these account aggregators were in news, or RBI has introduced the account aggregator framework back in 2016. I have a very important question for you. Guys, name the company which has recently surrendered its account aggregator license to RBI. Surrendered its license means the company is no more willing to operate as an account aggregator, and recently the company has surrendered its account aggregator license to RBI. And if I give you a hint, I'm talking about a company which is a major player in the field of UPI. I'm talking about the company which is holding, or which has captured the maximum market, of UPI. So the answer to this particular question is absolutely correct. That is PhonePe. Perfect, guys. Perfect. चलो आगे बढ़े. RBI बहुत बढ़िया काम कर रहा है. We all know that. Since after 25th governor of RBI, that is Shaktikanta Das ji, RBI has done really well, and recently RBI has been awarded with the Digital Transformation Award 2025. But the question over here is, this award was given to RBI by which organization? And RBI has received this award for two in-house digital developments. Name those digital developments due to which RBI has received this particular award. May I have the answer, please? PhonePe captures around 47% of the UPI market. That is absolutely correct.
That is absolutely correct. So this award has been given by Central Banking in London, which is based in UK, and this award has been given for two in-house developments. One is Sarthi. The first development is Sarthi, and the second development is Prava. I hope both the points are clear to everyone. Just give me yes, sir, so that we can move ahead. Moving on to the next point, sir. According to Morgan Stanley, India is expected to become world's third largest economy by which year? May I have the answers for this question, please? So India has witnessed from 2015 to 2024-25, India has witnessed a growth of 77%. That means India's GDP has grown 77%, and India is the fastest growing economy among the major economies of the world. So India will become third largest economy by 2028, and India will take over Germany in 2028, and it is expected that India will take over Japan in 2026. Give me the answer. In 2028, when India will take over Germany to become the third largest economy of the world, at that particular moment, what is going to be the GDP of the nation? What is going to be the GDP of India? May I have the answer, please? What is going to be the GDP of the country? May I have the answer, please, in the comment section? May I have the answer, please, in the comment section? So quickly give me the answer, guys, so that I can move ahead. Quickly give me the answer, guys, so that I can move ahead. Quickly. Okay, that is absolutely correct, sir. Indian economy will be of value $5.7 trillion. Who has given the answer? Sakshi has given the correct answer. That is absolutely correct. Now, there is one more option I'm getting. Sir, this is $6.7 billion, trillion dollars. Now, there is a conflict. Both the Sakshis, they are saying two different figures. So, guys, you choose which one is correct and reply in the comment section quickly. Guys, you all choose which one is correct. $5.7 trillion or $6.7 trillion. If you have revised the PDF which I have provided you in the previous session, then only you will be in a position to answer this question. Otherwise, it is a difficult question to be answered. Otherwise, it is going to be a difficult question to be answered. So quickly give me the answer, guys, for this particular question so that we can move ahead. Do reply in the comment section, please. Chalo, let's wait and watch who is going to give the correct answer. By the time I'll move ahead. According to the NPCI data, which payment app became the fifth largest UPI player in India? So we all know that PhonePe is the first. Second is we have Google Pay. On the third rank, we have Paytm. On the fourth rank, in terms of UPI transaction, we have Navi. And if I talk about the fifth player, that is Super.Money. Fifth player is Super.Money. That is absolutely the correct answer. Moving on to the next question. Name the institution that has won 2 gold awards at Scotch Awards 2025, and these awards have been given. One is related to the insurance service and the other one is related to an application. Insurance service and application, both of them are basically related to women empowerment, women entrepreneurs and whatnot. So in that particular case, the correct answer, which has won 2 gold awards, the answer to that particular question is Muthoot Finance or Muthoot Microfinance. Got it, guys? Clear? Chalo, here we go with the first news of the day. The first news which we are going to start today is changing dynamics of India's remittances, 6th round of India's remittances survey. Any idea, guys? Changing dynamics of India's remittances, 6th round of India's remittances survey. So this is basically a paper which has been published by RBI,
And in this particular paper, they have presented the result. What they have done, they have presented the result of sixth round of India's remittances survey. Now I don't know. Now I don't know how many of you know this term very well, that what is remittance. See, whenever we talk about remittance, remittance is basically, whenever this question is asked to you, and if someone asks you how you define a word remittance, then your answer should be, sir, remittance is basically the fund transfer which has been done without liability. What I'm trying to say? I'm trying to say my younger brother, he's staying in US, he's studying in US rather, and I'm staying in India. So he's studying in US and I'm sending him the fees so that he can pay his fees, he can pay his hostel bills. That means what I'm doing, I'm not giving a loan, it's not a kind of liability. I'm transferring the funds to my family itself for their use. That is known as remittance. With respect to India, we'll call it as what? So with respect to India, we will call it as outward remittance. With respect to India, we will call it as what? So we will call it as outward remittance. On the other side, in the near future, when my younger brother, he will complete his degree, he'll start working in US, then he will be out of his salary, he will be sending some funds to the family so that family can use those funds for investment, for growth, for survival and whatnot. That again will be termed as remittance. So this one is known as inward remittance and this one is known as outward remittance. So remittance is a source of foreign currency for a nation like India, where we have huge demand on the foreign currency due to our huge volume and bills related to imports of goods and services. We always look forward for inward flow of foreign currency, and inward remittance is an important source of foreign currency for the Indian economy. And if I tell you, India is on the first rank in terms of inward remittance. That means the highest inward remittance is received by India and the highest outward remittance is done from US. Are you getting my point? So highest outward remittance US, highest inward remittance in the world, that is India. Remember that whenever a non-resident Indian send funds back to his family or his or her family, that will be termed as inward remittance. And being in India, we witness outward as well as inward remittance, but India's inward remittance has grown drastically in the past years. Now you must be wondering कि sir, India का remittance सबसे ज़्यादा क्यों है, inward remittance सबसे ज़्यादा क्यों है? Quite obvious कि अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो migrated means the one who has come from the other parts of the world. So if I say the highest number of immigrants in the world is from India. So if we are the source of highest number of immigrants, then obviously we should be receiving the highest value of inward remittance as well. समझ आई ये बात? Clear हो गई story? If the story is clear, the concept is clear, give me yes sir. Now we'll discuss this news. So the news says recently RBI was in news and RBI has come up, or RBI has published a paper. The title of the paper is Changing Dynamics of India's Remittance, Insight from the 6th Round of India's Remittance Survey. So if I talk about this survey, so this survey has involved data from 30 authorized dealers. I hope we all know that whenever we talk about forex market is regulated by RBI according to Foreign Exchange and Management Act. We all know that RBI is the regulator and RBI is responsible to provide license to authorized dealer category 1, category 2, category 3 and as well as full-fledged currency exchanges. But if I talk about authorized dealers category 1, so authorized dealer category 1 license or registration is allowed only to the banks. So here 30 authorized dealers, that is banks, they have been surveyed
And why they have been surveyed? Because they cover 99% of the total inward remittance which India is receiving. Along with this, we include two major money transfer operators. What are money transfer operators? थोड़ी देर wait करो, I'll explain you. And finally, we have two cross-border fintech. We have involved two cross-border fintech companies as well in order to collect the data regarding the remittances. Last point is, this particular paper is authored by officials from the Department of Economic and Policy Research, DPR, RBI. If you remember, when RBI comes up with the grade B officer recruitment, it allows the recruitment not only for the generalist position, but it also allows for DPR and DSIM. So DPR is Department of Economic and Policy Research. Please check and comment in the comment section, क्या ये वही DPR है, क्या ये वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के लिए RBI separately grade B लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है? If yes, do reply in the comment section after this video. आगे बढ़ते हैं. इस पर्टिकुलर सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे गए और वो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें पुराने दिनों की, तो अर्लियर इंडिया वॉज रिसीविंग हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम GCC. GCC stands for Gulf Corporation Council. तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से हमें पहले सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस मिलता था. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि सर ये जो GCC है, in this GCC how many countries are included, or name the members of GCC? Any idea, guys? Any idea? Can you name the members of GCC? If you ask me, sir, GCC stands for Global Corporation Council, जो कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है. किसकी? 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की. एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज Middle Eastern countries, which all countries are included in this particular category? Sir, it includes, please pay attention, this is going to be really very important. Sir, it includes Bahrain. सबसे पहली कंट्री है जो कि इंक्लूडेड है इस लिस्ट में, दैट इज Bahrain. आफ्टर Bahrain we have Kuwait. कुवैत के बाद अगली जो कंट्री है दैट इज ओमान. ओमान के बाद जो अगली कंट्री है दैट इज कतर. कतर के बाद जो अगली कंट्री है दैट इज सऊदी अरेबिया. एंड द लास्ट कंट्री वी हैव इज यूएई. तो पहले इंडिया में जो सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस था वो जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्री से आता था, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आज भी जो हमारी मेजॉरिटी लेबर है, मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं, और वो भी स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लेबर which is involved in blue collar समझते हैं ना? White collar is for services, blue collar is for manufacturing. So they are involved in blue collar jobs and they are highest value or number is in UAE. तो UAE आज भी पहले रैंक पे ही है, लेकिन over the period of time हमने ये विटनेस किया है कि जो ग्लोबल जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है उनसे जो हमें इनवर्ड रेमिटेंस मिलता था उसकी वैल्यू कम हुई है. क्यों कम हुई है? क्योंकि सर एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दे टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. क्योंकि पहले वीवर और आई वुड से इंडियंस दे वर माइग्रेटिंग फॉर टेकिंग अप द ब्लू कॉलर एंड इवन रेड कॉलर जॉब्स, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ Indian labor possess the skills and India has become I would say the third largest nation is in the count of doctors, engineers, and this great mind of the country is trading out, due to which the inward remittance from the advanced economies is increasing, due to which the income, or I would say the inward remittance from the advanced economies is increasing. I'll just remove my image, you read out the same for me, and then I will be moving to the next point. After this, the next point we have is the survey has revealed some of the important facts. The survey has revealed that India's inward remittance has increased and it has become double.
it has become double. Guys, just read it once. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट सेज, अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें 2010-11 में, 2010-11 में इंडिया में जो इनवर्ड रेमिटेंस की वैल्यू थी दैट वाज 55.6 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंक्रीज होकर 2023-24 में डबल हो चुकी है एंड द वैल्यू वाज 111 द वैल्यू वाज 118.7 बिलियन डॉलर्स। तो 118 बिलियन डॉलर का इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एंड इट हैज increased with an average rate of 14.3% post COVID-19. COVID-19 के बाद हमने रिकॉर्ड किया कि ये जो इनवर्ड रेमिटेंस है इट्स ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट, 14.3% के रेट के साथ ये ग्रो कर रहा है सिंस COVID-19 और एंड इट हैज बीन डबल्ड इन अ डिकेड ऑलमोस्ट, एक 10 साल के गैप में इट हैज इंक्रीज्ड टू दी ट्वाइस वैल्यू। दूसरा पॉइंट आता है कि सर इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस कौन सा है? सर द हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम यूएस, जो कि शोकेस करता है इंडिया का स्किल, इंडिया की स्किल्ड लेबर, आईटी सेक्टर लेबर विच इज residing in US, which is traveling or I would say migrating to US to earn good living style, good living standards, and they are remitting highest amount back to India. So it has emerged the largest source of remittance, जो कि 27.7% टोटल रेमिटेंस का 27.7% रेमिटेंस कहां से आ रहा है? यूएस से, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इट वाज 23.4। ये आपके रेफरेंस के लिए है, डोंट मेमोराइज दिस, यू नीड टू मेमोराइज दिस डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये तो है ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो इस पर आएगा, लेकिन जब आप एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना चाहेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू विल बी यूजिंग द डेटा विच आई हैव जस्ट मार्क्ड अ स्टार। अगला पॉइंट आता है यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब इमारेट्स रिटेन्ड इट्स सेकंड पोजीशन। तो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज यूएई, और उसका जो ओवरऑल रेमिटेंस में कंट्रीब्यूशन है या परसेंटेज है दैट इज 19.2%। एंड आफ्टर दैट वी हैव यूके, देन आफ्टर यूके वी हैव सिंगापुर, वी हैव कनाडा, वी हैव ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज लिख दूं आपके लिए, then I would say inward remittance, top 5 countries: US, UAE, UK, then we have Singapore, then we have Canada, and after Canada we have Australia. लेकिन अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पर सर इंडिया में सबसे ज्यादा FDI कौन सी कंट्री से आती है, सो सबसे ज्यादा FDI जो रिकॉर्ड की गई है पिछले कुछ सालों में वो हाईएस्ट कौन सी कंट्री से है? दैट इज सिंगापुर। बट इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस US is on the first rank, UAE is on the second and Singapore is on the fourth, Canada। ठीक है, यहां तक नहीं भी याद करना देन ऑल्सो इट्स फाइन। सिंगापुर का रेफरेंस बस मैंने इसीलिए दिया ताकि FDI का रेफरेंस दे सकूं, बट इफ यू कैन रिमेंबर टॉप 3 दैट इज मोर देन सफिशिएंट। If you can remember top 3 that is more than sufficient. Moving on to the next point. What does the next point says? So the combined share of Gulf countries such as UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain stood at 38%, जो कि पहले होता था 47%, क्योंकि अब 50% का ये जो रेमिटेंस में शेयर है दैट हैज been transferred to the advanced economies which include US, which include UK, Canada, Singapore as well as Australia। ठीक है जी, तो ये पार्ट याद रखिएगा, रिमेंबर दिस डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम कहें सबसे ज्यादा FDI इंडिया में कौन सी स्टेट में रिसीव होती है? द आंसर इज महाराष्ट्र। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे द हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस is received in which state of India, then also my answer will be Maharashtra। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस
हैज बीन रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र, सेकंड इन केरला, थर्ड इन तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना है और उसके बाद है हमारे पास कर्नाटक। ठीक है जी, तो ये 5 टॉप स्टेट्स, अगेन 3 याद कर लो, बाकी 2 छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया की शेयर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की, तो वो ट्रिपल हो गया, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। पहले 6.6 मिलियन, यानी कि लगभग मैं कहूं तो इसको इंटू 10 करें तो दैट विल बी 10 टू द पावर 6, तो दिस इज 66 लाख्स। इट वाज 66 लाख्स, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया सर, 1.85 करोड़। तो इंडिया के जो माइग्रेंट्स का, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की नंबर है, दैट हैज increased 3 times. And if I talk about the share earlier, total migrants में इंडिया का शेयर था 4.3%. Now this share has increased to 6%. Now this share has increased to 6%. ये जो डेटा है ना गाइस, this data is important. This data is important and it can be asked, I would say it can be used by you all. इसको आप यूज कर सकते हैं for sure. इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर श्योर वाइल आंसरिंग और वाइल राइटिंग अ गुड डिस्क्रिप्टिव आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जीसीसी नेशंस अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ द टोटल इंडियन माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो अगर हमसे आज भी कोई पूछे कि इंडिया का जो माइग्रेशन है वो सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर कौन सी कंट्रीज में है, देन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 50% is holded in GCC. UAE is the highest hub for Indian migrants which are engaged in blue collar jobs as we already discussed. तो ये आपके रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स मैंने दे दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर दिस पॉइंट which is important with respect to your digital banking data. जब आप डिजिटल पेमेंट्स पे या डिजिटल पेमेंट रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होंगे, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर हम बात करें, इनवर्ड रेमिटेंस जो इंडिया को रिसीव हो रहा है, जो इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हो रहा है, उसमें जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, दैट इज ओवर 5 लाख रुपीज एंड इट हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ नियरली 29%। यानी टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है उसमें 29% जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा, उसकी वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा विच यू नीड टू रिमेंबर। अब वी आर कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस न्यूज, और लास्ट सेगमेंट क्या है ध्यान से देखना। एन एवरेज ऑफ 73.5% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस received by MTOs were through digital mode during financial year 2024. तो ये डेटा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए MTO है क्या, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स। अब मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम रिजाइडिंग इन यूएस, मैं यूएस में रिजाइड कर रहा हूं एंड आई वांट टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम माय बैंक अकाउंट टू माय पेरेंट्स बैंक अकाउंट। अब उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो मेरा बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में पहले मुझे अप्रूवल्स लेने होंगे सो दैट आई कैन मेक द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। रादर देन डूइंग ऑल दिस, व्हाट आई कैन डू इज मैं सीधा सीधा जाऊंगा मनी ट्रांसफर एजेंट के पास, मनी ट्रांसफर एजेंट, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के पास, और उसे कहूंगा कि सर मेरे इस बैंक अकाउंट से इतना पैसा आप प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए मेरे फादर के बैंक अकाउंट में, एंड उनका जो बैंक अकाउंट है दैट इज इन यूएस, सॉरी उनका जो बैंक अकाउंट है दैट इज इन इंडिया। तो जो आपने अमाउंट बताई, जिस सोर्स से आपने बताया, उसी सोर्स से ये पैसा क्या होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी मोड में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड द सर्विस प्रोवाइडर which helps you to do this or which helps you to complete the service, that is basically known as MTO. अब क्वेश्चन ये है कि सर हाउ दे ऑपरेट। अगर आप हाउ दे ऑपरेट के फॉर्मेट पर जाएंगे तो आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू विच इज मोर देन इनफ फॉर यू। उससे ज्यादा ना तो जरूरत है ना ही आपको दिमाग चलाना है। देखो ये समझो कि जो इंडिविजुअल यूएस में रह रहा है उसने अपने अकाउंट से, यूएस के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया एमटीओ के यूएस के अकाउंट में, या उसने कैश दिया एमटीओ को, या फिर उसने डिमांड ड्राफ्ट दिया एमटीओ को, जो भी है वो एमटीओ को पैसा मिल गया यूएस में। अब इसी एमटीओ का या तो ब्रांच होगी इंडिया में या फिर उसका टाई अप होगा किसी के साथ। तो जो ब्रांच उसकी एमटीओ की इंडिया में है, वहां उस इंडिया की ब्रांच से वो अमाउंट या तो आपके फादर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी
या फिर आपके फादर को ओवर द काउंटर जाकर कैश भी अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज हाउ द ट्रांसफर इज डन। अगर आप एक्चुअली देखें तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, कंपनी ने अपने एक ऑफिस में फंड्स रिसीव किए, दूसरे ऑफिस से फंड्स ट्रांसफर कर दिए, एंड दे अवॉइडेड, दे वेरी आई वुड से appropriately avoided the exchange rate risk on them। अपने ऊपर उन्होंने exchange rate risk को avoid कर दिया, लेकिन कस्टमर के ऊपर exchange rate risk लगाया। कैसे? जब कस्टमर आए, उन्होंने कहा $100 ट्रांसफर करने हैं, तो उन्होंने वो $100 को पहले इंडियन रुपीज में ट्रांसफर किया। लेट्स से बनते हैं 90 के हिसाब से 9,000, और उस 9,000 रुपीज पे उन्होंने अपनी फीस चार्ज की, और फीस चार्ज करने के बाद दे आस्क्ड देम टू पे $105 की $5 की फीस है, और 9,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। और जैसे ही ये 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए, जैसे ये 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट का जो रिस्क था विच हैज बीन ऑलरेडी इफेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी, समझ आ गई बात। लेकिन ये टाइम पीरियड इतना कम है, दैट मीन्स इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट, इट टेक्स 10 to 15 minutes to complete the entire transaction, which is more than enough, and it generally avoid the multiple exchange rate risk on the customer as well as on the recipient। So पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मनी ट्रांसफर ऑपरेटर एक कंपनी है जो ऑफर करती है मनी ट्रांसफर की सर्विस। कस्टमर्स दे कैन यूज MTOs टू सेंड एंड रिसीव मनी अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांसफर्स, कैश पिकअप्स, मोबाइल वॉलेट ट्रांसफर्स। कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल माय फादर, आई विल टेल माय फादर्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट विच आई वांट टू ट्रांसफर, currency in which I want to send my funds. For example, if I'm sending to India, I want to send my funds in Indian rupees, and preferred payment method ki I want to transfer in cash or account, that will be discussed. After giving all these details, MTO will convert the money from the client into the desired currency and send it to the recipient through the chosen payment method। तो जैसे ये फंड ट्रांसफर हुए from one corner of the world to the another, funds can be easily transferred within a span of minutes। Benefits क्या है? So पहला benefit है MTOs they have a broad network, जिसकी वजह से it is possible to use the MTO service almost in all the parts, in all the corners of the world। Sending and receiving money is very simple। Quick transfer of money is witnessed, and competitive exchange rates and fees make it more I would say promising for the customer point of view। So अगली बार अगर कोई पूछे MTO क्या है, आप बता पाओगे। इनवर्ड रेमिटेंसेस क्या है, आप बता पाओगे। इनवर्ड रेमिटेंसेस में इंडिया का क्या स्टेटस है, आप बता पाओगे। एंड दिस इज द एंटायर डिस्कशन of the paper which has been published by RBI। It was mentioned in the March bulletin। तो अगली बार अगर कोई कहे क्या माधव सर RBI बुलेटिन कवर करते हैं, तो आंसर इज यस, आई कवर द RBI बुलेटिन एज वेल। लेकिन हर एक न्यूज नहीं, जो न्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, सो दैट if any question is asked you will be in a position to answer it। If you like it, just give me a thumbs up so that I can move on to the next question। And here we go to the next news। Before I start the discussion on the next news, which bank was penalized? Which bank was penalized मतलब किस बैंक के ऊपर पेनल्टी चार्ज की गई by RBI for what? So for contravention of directions related to reporting of transactions under the liberalized remittance scheme। देखो वैसे तो 99.9% RBI is not going to ask questions on penalty values, but हाँ अगर penalty liberalized remittance scheme जैसे important topic से है, then there is a probability it can be asked। तो अगर हमसे कोई पूछे what is liberalized remittance scheme, so liberalized remittance scheme is basically a scheme introduced by RBI under which RBI allows the Indian citizen or Indian resident to transfer $250,000 per year विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो इसका मतलब कि आप बिना प्रायर अप्रूवल के एज एन इंडियन रेजिडेंट यू कैन ट्रांसफर $250,000 टू द इंडिविजुअल्स, टू द कंपनी, जैसा भी आपका जो भी ट्रांजेक्शन है, यू कैन डू दैट। अब रिसेंटली कोई एक बैंक था या ऑर्गेनाइजेशन थी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर नहीं किया अपना डेटा, दैट मीन्स इट हैज नॉट
completed the directions related to the reporting of transactions done under liberalized remittance scheme and the penalty value charged is 36.28 लाख. एक्चुअली में ये बड़ी कंफ्यूजिंग फिगर है क्योंकि रिसेंटली 2 पेनल्टीज चार्ज की गई है. सेंट्रल बैंक ने एक तो पेनल्टी चार्ज की 36 लाख की, किस पर? आईडीबीआई पर, क्योंकि आईडीबीआई फेल हो गया था, imposed for failing to undertake due diligence while processing inward remittance from foreign currency account. तो ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो इनवर्ड रेमिटेंस प्रोसेस किए गए उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स थी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड. एंड ऑन द अदर साइड 36.28 लाख वैल्यू का 36.28 लाख वैल्यू का जो पेनल्टी है दैट हैज बीन चार्ज ऑन सिटी बैंक फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द डायरेक्शन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर द एलआरएस. तो जैसे हमने अभी अभी पढ़ा वो पेपर, उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने पेपर में रेमिटेंस के बारे में बात की तो ये दोनों की दोनों जो न्यूज है दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप नाउ यू नो व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी सर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो आंसर होगा सिटी बैंक. लेकिन अगर यही लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की जगह पॉइंट होता इनवर्ड रेमिटेंस का और पेनल्टी वैल्यू होती 36 लाख, तो उसमें हमारा आंसर क्या बन जाता सर? उसमें हमारा आंसर बन जाता आईटीबीआई. In that particular case, the answer of this particular question would have been ITPI. Got it, guys? Clear? Moving on to the next nation. So the next nation, not the question, the next nation is the country ranked first globally in terms of all-time funding for women-led startups. We know that India is the third largest. India is the third largest ecosystem, startup ecosystem overall. बट टुडे अब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे. आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विमेन लेड स्टार्टअप्स की. और सबसे ज्यादा फंडिंग कौन सी कंट्री के विमेन लेड स्टार्टअप्स को दिया गया है अब तक? व्हाट विल बी योर आंसर? डू यू लाइक द क्वेश्चन गाइस? अच्छा लगा क्वेश्चन? जब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो अक्सर काफी लोगों को ये लगता है यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया. तो डोंट वरी, in our upcoming sessions I will be covering all these kind of questions so that you will be in a position to answer them in the examination. लेकिन अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया, do hit the like button so that I can get to know कि हाँ आपको जो questions हैं, जो level of questions हैं, उनका जो मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मेट है वो आपको पसंद आ रहा है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. चलो तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं. सो द कंट्री रैंक्ड फर्स्ट globally in terms, then the answer is US. So the country on the second rank, then the answer is India. Let us check it out and then we'll come back. So global funding for women-led startup. Overall अगर हम global funding की बात करें, तो overall जो global funding है women-led startups को वो 29.6 बिलियन पर आकर रुक गई है. It has dropped by 11% क्योंकि last year it was 33.1 बिलियन डॉलर्स. और इसमें अगर हम डिक्लाइन की बात करें 2022 से, सो 2022 में ये जो फंडिंग थी दैट वाज 37.5 बिलियन डॉलर्स. दैट मींस ईयर ऑन ईयर बेसिस में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी जो विमेन लेड स्टार्टअप्स को फंडिंग है दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग. सो डिस्पाइट ऑफ दिस डाउनटर्न इंडिया रैंक्ड सेकंड ग्लोबली. India is on the second rank globally in terms of all-time funding for the women-led startups, and the first rank has been backed by US. और ये जो data है, this data or this report was given by Trax. So Trax has given this particular report और उस report के according India is on the second rank, US is on the first rank. तो अगर आपको ये list दिखा दूं तो 2024 में women-led startups में जो investment हुआ that was 29.6 billion dollars. In 2023, this funding was 33.1 and in 2022, this was 37.5 billion dollars. Women-led startups, they accounted for 11.7% of the global funding. तो अगर हम बात करें total funding जो मिली women-led startups को, that is 29.6 billion dollars, and this 29.6 billion dollars is 11.7% of total funding.
तो ग्लोबल टोटल फंडिंग का 11.7% is 29.6 and 29.6 billion dollars is the funding done to the women led startup. इसका मतलब ये हुआ कि women led startups को पूरे वर्ल्ड में जो फंडिंग मिली है that is 11.7% with respect to the total funding. अब इंडिया की पोजीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं. सर इंडिया इज ऑन द सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइम फंडिंग फॉर विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स. विमेन, तो ये जो सारी बातें हो रही है दिस इज रिलेटेड टू दी विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स. और इंडिया ने आज तक, इंडिया के जो विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के जो आज तक विमेन लेड टेक स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने कितनी फंडिंग ली है? दैट इज 26.4 बिलियन डॉलर्स. हाईएस्ट फंडिंग मिली थी ऑब्वियसली क्योंकि ये वो ईयर है जिसमें ओवरऑल एफडीआई भी इंडिया में हाईएस्ट था एंड दैट वाज 6.3 बिलियन डॉलर्स. इंडिया की अगर हम बात करें ग्लोबल शेयर 2022 में इट वाज 15.18% and India has been ranked third in 2024 in annual funding after US and UK contributing 3.96% of the global women led startups. तो अगर हम बात करें all time funding, so all time funding में India is on the second rank. If I talk about India ranked third in 2024 in annual funding, तो annual funding में India is on the third rank. In all time funding में India is on the second rank. India is behind US and over here India is behind US as well as UK. India is behind US as well as UK. Moving on to the next point. The next point we have is, sir India में city wise क्या trend है? अगर हम सिटी वाइज ट्रेंड की बात करें तो बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर. तो याद रखिएगा हाईएस्ट विमेन लेड स्टार्टअप्स दे हैव रिसीव्ड द फंडिंग इन बेंगलुरु, सेकंड मुंबई, थर्ड इज दिल्ली एनसीआर. नो न्यू यूनिकॉर्न इन 2023-24. जो लास्ट इंक्रीज आया था यूनिकॉर्न्स का रिलेटेड टू विमेन लेड स्टार्टअप्स दैट वाज 2021. विमेन लेड स्टार्टअप्स जो कि पब्लिक हुए, वन इज मोबिविक, देन वी हैव उषा, देन वी हैव तनवाल, इंटीरियर एंड मोर एंड लो and Lawseco. These are the startups which have went public, that means which have issued IPOs, initial public offerings. They have issued their shares to the public and raised the funds from the public itself. ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? I guess all these points are clear. Done? If it is clear, just give me yes sir. तो all time funding में इंडिया का क्या रैंक है? सेकेंड. ओवरऑल अगर हम एनुअल फंडिंग की बात करें फॉर 2024 दैट इज थर्ड. ठीक है जी, तो ये न्यूज जरूर देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. आदित्य प्रकाश, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस बट लेट मी कंप्लीट द एंटायर डिस्कशन. सो इन द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन फॉर श्योर. सर SEBI was in news recently because SEBI has recently cut the timeline for the completion of right issues to 23 days. I hope आप सबको पता होगा that whenever the company it issues shares to the public with the motive of earning, with the motive of raising capital, we call it as share issue. And the share issues include issuing of equity shares. It also include the issuing of preference shares. It also include the issuing of right issues. What is right issue? So right issue basically means when company issues the shares with a right to purchase. I come again. When company issue the shares with a right to purchase, इसका मतलब हर कोई उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता. There are certain rights attached to those shares and only specific individual can purchase that particular share. For example, a company is issuing the shares for its employees. That means this share will be taken up. This share can be taken up. This share can be purchased only and only by the employees of the company that comes under the category of right issue. तो पहले ये जो right issue का process था, it was very lengthy. It was very lengthy. It ranged from 126 days to 317 days in the past. लेकिन अब SEBI ने कहा नहीं sir, in order to increase the capacity of the company to raise the funds, at least through right issue, जहां पे पता है कि you are targeting the specific segment और वो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं दैट शुड बी डन इन अ वेरी रश्ड मैनर. और उसके लिए जो अब टाई अप है या फिर जो टाइमलाइंस है दैट इज 23 डेज. तो क्या क्या चीजें हैं सर? राइट इश्यूज विल बी कंप्लीटेड विद इन 23 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर अप्रूविंग द इशू. सो वंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव अप्रूव्ड द इशू,
as per the as per the SEBI circular, then within 23 working days you can complete your issue as per SEBI. तो मुझे बताइएगा, होमवर्क है ये, this is homework, that before this कितने दिनों में, before this 23 days वाला clause, what were the count of the days in which a company was capable to issue and raise the funds through right issue. ये जो mechanism है, this is even faster than the preferential shares. That means अगर आप preferential allotment में जाते हैं, then also it takes around 40 working days. लेकिन now in right issue you can issue the shares within 23 days, which means you can raise the funds within 23 days. तो ये जो right issue है, it will be kept open for subscription. That means you will announce that I am issuing the right issue. If you are interested, you can subscribe for it, and you will open up this subscription for minimum 7 days and maximum 30 days. So in the span of minimum 7 to maximum 30 days, if you are willing, you can apply for the share. And if the subscription capital is less than the offered capital, समझ आ रही है ये बात है? इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ने कहा कि हम 100 करोड़ के शेयर बेचना चाहते हैं राइट इशू पर, और डिमांड आई 1000 करोड़ की, तो हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन कैपिटल बड़ा है किससे? इशू कैपिटल से। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में रैंडम अलॉटमेंट की जाएगी। बट अगर सब्सक्राइब कैपिटल आता 50 करोड़, मतलब डिमांड आई कि मैं 50 करोड़ के शेयर खरीद सकते हैं हम लोग, लेकिन कंपनी इशू करना चाहती थी 100 करोड़ के, तो जितनों ने जितनी डिमांड की उन सबको वो शेयर्स क्या किए जाएंगे? दैट विल बी अलॉटेड। ठीक है। राइट इशू जो है, इट विल बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 30 days. दैट शुड बी क्लियर टू यू। सेबी हैज मैंडेटेड कि यू हैव टू अपॉइंट, सेबी ने कहा कि कंपनी को अपॉइंट करना होगा। व्हाट? सेबी हैज आस्क्ड द कंपनीज टू अपॉइंट मॉनिटरिंग एजेंसी to supervise the use of proceeds from all types of right issues of the equity shares. Currently, अगर आप securities offer करेंगे for more than 50 crores, if you are issuing the right issue shares of value more than 50 crores, then you need monitoring agency. Otherwise, there is no need of monitoring agency if you are issuing for value less than 50 crores. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया सर? ये 50 करोड़ वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट हो गया, ये मॉनिटरिंग एजेंसी इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड दिस 23 वर्किंग डेज इज इंपॉर्टेंट, दिस 40 वर्किंग डेज इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस विंडो 7 days to 30 days इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So I guess each and every point which I have discussed today is crystal clear. So if it is clear, just give me yes sir. Now if you have any doubt, you may ask please, but I have given you the homework. Homework is, please check and reply what was the timeline or what was the average number of days which was taken by the companies earlier to complete the right issue. To complete the right issue. ठीक है जी? I guess कोई डाउट नहीं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। I will be answering your question. So I have a doubt from Aditya Prakash. RBI inject liquidity in the market through open market operation and variable repo rate. Open market operation का मतलब है when RBI purchase, आपने कहा इंजेक्ट, तो जब RBI परचेज करेगा मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो वहां पर आरबीआई ने क्या किया? बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया, या आई वुड से एंटिटीज की, फाइनेंशियल एंटिटीज और ओनली एंटिटीज विच हैव ओन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो परचेज किया जाएगा, एंड अगेंस्ट दिस परचेज मनी सप्लाई विल बी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। बट ऑन द अदर साइड, वेरिएबल रेपो रेट का मतलब है बैंक विल अप्रोच टू आरबीआई and bank will borrow loan from RBI against government security as collateral. और जब आपका लोन कंप्लीट होगा, as a bank you pay back principal, you pay back interest, then the same government securities will be purchased by bank, and that is the reason we call it as repurchasing agreement. That is the reason we call it as repurchasing agreement. समझ आ गई बात? Is it clear, Aditya? So, what's macro and micro financial stability framework? इसके लिए अभी आपको थोड़ा टाइम चाहिए. I will be coming for this in my upcoming sessions.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमटीओ एंड सीबी एनबीएफसी? अच्छा, अभी के लिए अगर मैं कहूं अभी के लिए अगर मैं कहूं दे आर सेम, बट इन द नेक्स्ट क्लास, अब आपने पूछा है, देन आई विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड डिफरेंस, ताकि वो एक डिफरेंस का एक स्लाइड मैं आपको दे दूंगा और उसी दिन समझा भी दूंगा. दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन. तो एक बार पढ़कर आइएगा सब लोग डिटेल में एमटीओ, क्योंकि टुडे मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट एमटीओ. तो पहले आज एमटीओ को डाइजेस्ट कर लो. नेक्स्ट क्लास में शिवम यू जस्ट रिमाइंड मी अबाउट द सेम क्वेश्चन, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन फॉर श्योर. ठीक है जी, समझ आया, मजा आया? तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आई विल बी कैचिंग यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टू गो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय, टेक केयर. एज आई ऑलवेज से, गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.